Students, this Sunday I had a major test. Yes, sir. Okay, how's the paper? Good. And physics, what exactly it was? Okay. Kinematics, vectors, calculus, Okay, but it's and you are Newton's laws of motion. okay. But was it easy for one to crack it? And were you able to crack the questions? Yes, sir. Most of the questions are easy. Okay. Now, this is a response given by Mihir. I don't know about the rest of the students. Do they feel the same in that case? Okay, but somewhere or the other, you should be able to, students. Now it's high time that you can't say no that we are not able to get it, students. And one thing do keep in mind, जब भी number of chapters बढ़ता है students, automatically performance down होता है, लेकिन you don't have to keep a performance down, students. एक consistency रखना जरूरी है in physics, and you need to have a growth in physics, and the growth should be gradual. ऐसे नहीं कि you have a good jump. It's not like that. Scoring in physics ऐसे नहीं है students की you are going to go on taking more and more in marks. It's not a school level studies. Okay, तो वहाँ अगर तुम्हें previous exam से अभी के exams में अगर 2 mark 4 mark भी ज़्यादा आ गए, so that is also a good sign. But always try to define yourself. Put a target कि मुझे इतने marks चाहिए. I want to work out for that. And all the time try to go for 75% of marks, 75 to 80% of marks. Always prefer for that, and then try to grow from there. I don't know about it, how exactly the rest of the students have found out the paper to be. But whenever you have exams, students, see to that you be sincere, you try to set up your timetable accordingly and work accordingly. Okay, let's move further, students. We did the formula for students' velocity of a car on a circular unbanked road, and we got the formula as under root mu rg, which I derived it earlier. Okay, and that is the maximum speed for a car to move on a circular unbanked road. Students, unbanked. Okay. What is the safe speed? Then it was less than 100 mu rg. What is the speed for the car to topple? What is the speed for the car to topple? It will be greater than 100 mu rg. This is what a student should keep in mind. Okay, these are the 3 mathematical relations which you need to know it. उसके बाद में फिर अनबैंक रोड की जगह पे फिर हम बैंकिंग पे गए थे. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बैंकिंग का फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया. Okay, for a banked road, students. Okay, banked road, not considering friction. So what exactly the velocity maximum was? Under root r g tan theta. Now, मुझे ये बताओ, what exactly you mean by the term banking, or yes, what exactly mean by the term banking of road? Anybody? Students, what do you mean by the term banking of road? So the outer side of the road is raised to a height. Okay, the outer edge of the road is raised in comparison to the inner, isn't it? Yes, sir. Okay. Now, is this theta very large or very small? It is a smaller one. It's a smaller one in that case. Okay. So it's a smaller one we consider. And since it's a smaller one, students, uh, therefore, can I write down tan theta as nearly equal to sin theta? Yes, sir. Students, theta is the angle of banking. Students, ये ध्यान रखना. Theta क्या था? If I happen to draw the diagram, this is theta, students. ये है तुम्हारा opposite और ये है तुम्हारा length, the width of the road. Students, since theta is small,
theta is small, therefore can I say tan theta can be nearly equal to sine theta, and sine theta can be written as h by L. Therefore, can I write on the formula for Vmax as under root RG instead of tan theta, can I say h by L? Is this clear to all of you? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Since अगर तुम I don't know about it, how many of you all know trigo, or how many of you have done trigonometry? Students, if you have a log table books, अगर तुम्हारे पास में log table की book है students, तो right now also you can look into it students. अगर चाहो तो natural tangents, natural sines में जाओ, okay, log table में, और suppose you go for 2 degrees. Natural tangents में students left hand column में 2 degrees रखो ना. Those students who are ICSE, they must have done this. SSC and CBSE must have not gone through the log books. लेकिन अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स नेचुरल टैंजेंट्स में अगर अगर तुम लोग देखोगे 2 डिग्री स्टूडेंट्स, सो tan ऑफ 2 डिग्रीज की तो वैल्यू देखोगे और sin ऑफ 2 डिग्रीज की वैल्यू देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट तुम्हें फर्स्ट 2 डिजिट तो सेम ही दिखाई देंगे. समझ में आ रहा है? यानी द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 2 डिग्रीज एंड sin ऑफ 2 डिग्रीज इज नियरली द सेम. तो अगर अगर मेरे फॉर्मूला में tan थीटा आता है, लेकिन tan थीटा तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाता है ना. लेकिन अगर मैं sin थीटा लिख दूं तो कहने से आई कैन रन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाई नॉट? सो h बाय l. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And theta is the angle of banking students. यहाँ पे theta is the angle formed by the width of the road with respect to the horizontal. अभी अभी यही चीज को अगर सपोज मैं बताऊं कि the car is going on a circular banked road in this case, तो स्टूडेंट्स जब ये कार बैंक रोड, यानी ये है क्या मालूम स्टूडेंट्स? हाउ एग्जैक्टली यू कैन कंसीडर दैट if you go for the banking of road students, it's in this manner. यही डायग्राम को अगर मैं वापस रीड्रॉ करूं तो ये जो मेरा h by l है स्टूडेंट्स, ये जो कार है तो ये सोचो कि कार का ये इनर टायर, कार का इनर टायर है, ये आउटर टायर है, और कार परफॉर्म कर रही है सर्कुलर मोशन स्टूडेंट्स. द कार इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑन अ बैंक्ड रोड. इट्स गोइंग इन अ सर्कल. यानी इसी को अगर मुझे दिखाना है तो आई कैन शो इट इन दिस मैनर. Since this is what the banking is done. This is how the banking is done. The outer road is raised as compared to the inner one. ये तुम्हारा सेंटर है. अभी जो कार जा रही है स्टूडेंट्स, लुक ओवर हियर, द कार इज इन दिस मैनर. Think as if it's a small car which is going in the forward direction students. ये कार ऐसे ऐसे टर्न हो रही है. It's performing circular motion, but it's on a banked road. मैंने क्या किया है, इसी डायग्राम को मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखा दिया है. अगर ये है द आउटर एंड ऑफ द रोड इज रेस्ड एज कंपेयर टू इनर, तो कहना चाहिए द आउटर टायर इज रेस्ड इन कंपैरिजन टू इनर. अभी देखो स्टूडेंट्स, कहना चाहिए ट्राइंगल ABC, कैन आई मेक इट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR? Yes, sir. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, क्यों नहीं? है ना? See, if the outer end of the road is raised, then the outer tire is raised as compared to inner because it's raised on an inclined plane. तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. अगर ये h है तो ये भी तो h हो गया. ये अगर तुम्हारा लेंथ l है तो ये भी तो l है, l dash. What exactly is this? It's a distance between the two tires, h by l. And students, जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो ना तो ये ध्यान में रखना, कहाँ कहाँ पे वो जानबूझ के
Students, they will not say that the outer end of the road is raised. They will say that the outer tire of the vehicle is raised as compared to inner. And the distance between the two tires is given to you. So what is the distance between the two tires is L. Outer tire is raised as compared to inner, that is H. And that is also tan theta. Theta is the angle of banking. It's the angle formed by the inclined plane always with the horizontal students. And the formula for maximum velocity of a car on a banked road is under root RG tan theta students. Now मुझे ये बताओ students, मुझे ये banking के लिए क्यों पढ़ना पड़ा? What's the reason for me to learn this part or you have to understand this? Why should I go for banking, students? What's the reason behind it? Students, why should I go for banking? Or to My reach formula, the destination quickly on a circular road. circular road of same width. Yes. Okay, that's one thing to take to reach a particular place in a short time for the same length of road, and for the same width of road. Secondly, coefficient of static friction cannot be dependable. Students, you cannot trust. Students, you can't trust mu. Mu को trust नहीं कर सकते. अरे तुम जा रहे हो सर्कुलर रोड के ऊपर, तुम्हें ये नहीं पता ना कि आगे का रास्ता कैसा है भाई. शायद आगे के रास्ते के ऊपर ऑयल पड़ा हो. तुम्हारी कार तो न्यू ब्रांड है, तुम्हारे टायर्स भी एकदम सही है. बिकॉज नॉर्मली व्हेन पीपल गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव, okay, for example, you decide to take your car from here to Gujarat or from here to Delhi or from here to Rajasthan, it takes 10 hours 11 hours drive in that case. तो उस टाइम पे तुम्हारी कार की कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए. the tires and everything has to be proper in that case. तो तुम तो तुम्हारा एकदम परफेक्शन के हिसाब से जाओगे, एवरी all checks हो जाएगा तुम्हारा. लेकिन who knows how are the surfaces ahead? You are trying to drive a vehicle with 90, 100, 110 kilometers per hour. But all of a sudden अगर आगे ऑयल आ गया तो क्या करोगे तुम? तो कार तो स्किड हो जाएगी. तो म्यू को ट्रस्ट नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है. और दूसरा, तुम्हें क्विक पहुंचना है. That's why we go for banking. So this is the formula for banking. Are you getting it? When the roads are banked. और जब इसका फॉर्मूला हमने निकाला तो हम लोगों ने क्या किया था? How do we get the formula? Anybody can tell me how do we get the formula? Students, why am I asking you all again? Because now we'll be going for few more relations which are dependent onto this. That's why I'm asking you again. Students, how do we get this mathematical relation? Can anybody tell me? Yes, Yash from Khargar, 89A, 86A, Vadim, Umer, Sujit, Shubham, Shreya, Shrina, Sakshi, Richa, Rakshay, Prisha, Prapti, Nitu, Minu, Krisha, Kaushik, Jyoti, Jyoti, Jai, Gauri is answering. Thea, Akrish, Acharya, Carol, Rishi. How do you get, students? Students, कैसे तुम्हें मिलता है? Yes, sir. Yeah, बोलो. Sir, but how does you told that we study banking of a road for the second reason is that we cannot depend on mu, that is the frictional value. Yes. Then how does it help in studying banking road? Like banking of road, even if their oil is there, then how will the what is the relation between studying a banking road and the My and dear, if in case if there is some amount of oil or some amount of it, what exactly? Will you go outwards or will you go inwards? Okay, how exactly you will go? On a circular road when it's unbanked and some amount of oil has been put. So will your car will go tangentially outwards? Yes or no? yes, sir, it will.
and that tangential outwards, the calamity will be much more severe when it is unbanked. लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, कोई भी कार अगर तुम सर्कुलर रोड पे देखते हो जो बैंकिंग नहीं किया हुआ है, स्टूडेंट्स, what is the reason for the car to skid? I made it very clear that the reaction force on the inner wheel is less as compared to the reaction force on the outer wheel. That's why the car topples. The car topples or it skids. लेकिन अगर suppose मैंने bank किया, students, now if I bank it, so see, where is my inner wheel? How it is placed? Look at my outer wheel. Now suppose if there is some amount of oil, of course skidding यहाँ पे भी होने वाला है. लेकिन the amount of damage, the amount of calamity which is going to happen in the first case in comparison to the second case can be minimized or can be somewhat averted. Are you getting this? Yes, sir. Are you getting this? यहाँ पे तुम्हारा देखो, तुम्हारा car is entirely straight. It's almost straight. It's going on a straight path. लेकिन जैसे मैंने बैंक किया कि देखो इनर टायर नीचे की तरफ आ गया, यानी इनर टायर स्टिल इट्स इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, यहाँ पे इट्स कमिंग लेस इन कांटेक्ट क्योंकि रिएक्शन फोर्स कम है. लेकिन बैंकिंग करने से होगा क्या, तुम्हारा इनर टायर थोड़ा सा और फर्मली कांटेक्ट में आता है, और अगर ज्यादा कांटेक्ट में आएगा तो फ्रिक्शन होल्ड करेगा. अभी आगे अगर ऑयल भी है तो भी वो फ्रिक्शन थोड़ा सा फिर भी होल्ड करने को ट्राई करेगा. But of course, accidents can take place over there also. That means when you go for banking, does friction play a role? Yes, friction also plays a role. And that is what I'm going for it now. यहाँ पे भी अभी मैं friction के बारे में बात कर रहा हूँ. यहाँ पे भी now I'm going to go for mathematical relation considering friction. This was a mathematical relation not considering friction, neglecting friction. That's why nowhere mu is coming in the formula, students. See over here, it's simply Rg tan theta. But over here, I'm going to speak about now friction also. Is it clear? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Sir, in this instance, the car is being uh, pushed down onto the ground by two forces. No? So it is Which case you're trying to go for? in a banked road. The car is pushed down by two forces, no? On the ground. Yeah. If you consider friction will also play a role. And I asked you just now how to go about it. Then it's the component of the normal reaction force. Yes. The component of normal reaction force. Now. Yes. Okay. Now, students, just have a look at this part of it. Can you see it, students? The car is going on a circular. Yes. Sir. Yeah, banking. See the bank. See the banking given to it. This is how the car is going to move. I'll show it once again, students. Okay. Now see, can you see that the outer end is raised as compared to inner? Yes. The bar topple नहीं हो रहा है. That is what it is. So students, ये gain speed करने के लिए. This is simply to gain speed on a bank road, students. Any car, if I want to go on a bank road, in that case, students, we can make a body to have certain gain in speed. And when you actually go for the concept, students, this is how the vehicles are set to move, students. Okay. See, the path is circular. See the center and the radius vector. The tangential velocity is always perpendicular to the radius vector. The inner tire is towards the inner side, students. वहाँ पे reaction force कम है. See, now they are showing the reaction force of friction is acting, which is holding the car.
and the driver is forced to make the wheel to rotate in that case because of the friction. There are two frictions acting on the inner tires, and the reaction force on the inner tires is always taken care of. Now, this is somewhere you might see a car going, somewhere you might come across a circular part. See the bank. कितना छोटा सा बैंकिंग है स्टूडेंट्स. जब भी सर्कल के ऊपर देखो तो बैंकिंग लगेगा नहीं कि बैंकिंग है, लेकिन वहां पे बैंकिंग दिया हुआ है स्टूडेंट्स. You see a car going on a circle, there is small banking. See, there is a banking if you can see it. थोड़ा सा बैंकिंग देते हैं. Theta is very small. You don't feel it. And the car hold its speed in that case. और जब भी वो टर्न के ऊपर जाता है ना, it will go on the outer side. It will go on to the outer side. Whenever you take a turn, it will go on the outer side. See, it's going on the outer side whenever you go for a turn. Okay, students? Yes, sir. Okay, students. So now when you speak about with respect to your question related the concept for the students, we are speaking about now. So Ovi asked you what is the relation? How do you go about with the mathematical relation, students? So यहाँ पे हम लोगों ने जब derivation किया था, it was a component of the normal reaction force. Okay. Now students will be going for banking of road, students. Okay. But now we'll consider friction. Students, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे? Friction को play करेंगे. Okay. This was eliminating friction, students. यहाँ पे था we eliminated friction, but now we consider friction. Since now I'm going for banking of road. Let us say the car is going on a banked road. Now we consider friction. Okay, अभी हम friction के हिसाब से जाते हैं. Friends, when you saw the video which I showed it to you, when the car was trying to gain speed, friends, did you find out that the car was going on the outer side of the circular road or on the inner side of the circular road? जब भी car turnings पे जा रहा था, and its motion was accelerated, the speed was increasing. Where did the car will try to move? The outer side. Outer side, क्योंकि simple relation, students, v is equal to r omega. Circular motion का formula क्या है? v is equal to r omega. अगर जितना रेडियस बड़ा हो गया, देखो ना, ये सेंटर है स्टूडेंट्स. ये सोचो कि ये सेंटर है, सर्कुलर पाथ का सेंटर है. ये तुम्हारा सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है. आई विल ट्राई टू पुट फॉर दिस एज अ सेंटर. एग्रीड. नाउ अगर तुम आउटर की तरफ जाओगे स्टूडेंट्स, यानी अगर तुम्हें Vmax के लिए जाना है स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारी कार को मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए जाना है, तो तुम्हारी कार बाहर की तरफ जाएगी. तो फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट होगा? इस तरफ एक्ट होगा. Since force of friction will act in this direction. क्या ये clear हुआ students? Students? Yes. Everybody please, this is very important for one to learn it and understand it. I'm drawing the diagram, I'm drawing a triangular part of it. Students, to see to it that the free body diagram should be clear. तुम्हें forces distinct होने चाहिए. लेकिन actually speaking जब भी तुमने देखा था students banking of road,
So don't you think so कि outer end of the road, the outer end of the road was raised in comparison to inner by a very small angle, है ना? बैंकिंग तो इतना छोटा होता है. अभी यहाँ पे मैं फोर्सेस दिखाने लगूंगा तो कुछ पता नहीं चलेगा. तभी जाके स्टूडेंट जब भी टीचर सिखाते हैं तो उसको मैग्नीफाई करना पड़ता है. गेटिंग इट? दैट्स व्हाई जब भी मैग्नीफाई करते हैं ना तो स्टूडेंट्स ये सोचना शुरू कर देते हैं कि गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है ऑन द प्लेन. No idea. I'm not doing any kind of questions related to a block moving on an inclined plane. Laws of motion के questions नहीं हो रहे हैं. जब जहाँ पे तुम यहाँ पे एक pulley fix करते थे, and then the tackle is connected to it, you suspend some weights, and then the block is going up, it's coming down, friction is going to act. No, it's not going along the plane, students. It's not going up and down the plane. It's going along the circumference of the road. Just how I showed you the video. So when you see the video, you will come to have a clear picture. Okay, it's like that. मैंने एक सेक्शन दिखाया यहाँ पे. यानी जब भी कार की स्पीड मैक्सिमम होगी तो स्टूडेंट्स वो कहाँ की तरफ जाएगा? वो बाहर की तरफ जाएगा स्पीड मैक्सिमम के लिए. तो उसका फ्रिक्शन किस तरफ होगा? अंदर की तरफ होगा. अगर ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे है. नाउ व्हाट आर द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू इट? तो बोले सर अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू इट यानी कार यहाँ पे है. सर कार का खुद का वेट भी तो नीचे की तरफ एक्ट होगा, जो हम लोग ने पहले भी किया था इसके लिए. सर यहाँ पे इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी एक्ट होगा. स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? Yes. ये तुम्हारा एंगल 90 हो जाएगा. ये थीटा दिया है तो कहने से दिस एंगल इज आल्सो थीटा. तो ये एंगल भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा. आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. नाउ कहने से the force of static friction students can be decomposed into two vector, है ना? That is called as resolution of vectors. Students, vectors में पढ़ाई कि नहीं पढ़ा? Yes. Yes. Okay, resolving vectors into two vectors mutually perpendicular to each other. Students, vectors mutually perpendicular to each other. तो मैंने इसको रिजॉल्व किया. तो एक वेक्टर इस तरफ गया और दूसरा वेक्टर इस तरफ गया. कॉस के साथ वाला ये क्या होगा? सर ये होगा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू इट्स कंपोनेंट कॉस थीटा. ये क्या है? सर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू कंपोनेंट साइन थीटा. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, हाँ सर वो भी तो रिजॉल्व होगा प्रीवियस केस के हिसाब से, बिकॉज यू नीड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द कार टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ. तो मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को भी मैं रिजॉल्व करूंगा इनटू टू कंपोनेंट्स. अगर मैं नॉर्मल को रिजॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स इनटू टू कंपोनेंट्स, तो व्हिच आर द टू फोर्सेस, व्हिच आर द कंपोनेंट्स वी कंसीडर? सर ये अगर थीटा है तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा. अभी मैं n को डिकम्पोज करो तो ये क्या होगा? n cos थीटा हो जाएगा. और यहाँ पे क्या होगा? n sin थीटा. स्टूडेंट्स, क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको? Yes. Yes, sir. Please understand students what are the forces acting. Many students don't understand how to go about with the forces. And students, तुम्हारे MCQs और तुम्हारा thought process उसी के अंदर. Now suppose अगर मैंने question पूछा, students, what are the forces required for the car to move on a circular bank road considering friction? तो तुम्हारा answer होना चाहिए, it's the component of the normal reaction force and the component of the force of static friction. Which component? Sin theta. और यहाँ पे cos theta. ये Fs क्या है? Force of static friction. How is force of static friction? So force of static friction is directly proportional to normal reaction force, and that is equal to what? Mu s into n. What does mu stands for? Coefficient of static friction. What does n stands for? Normal reaction force. And what exactly mu depends on to? The surface and the tires in contact. यानी जहां पे Fs होगा वहां पे तुम क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? Mu s n. Now students, don't you think so that you are getting two equations? Now if you want to solve it, you can have two equations. एक equation कौन सा students? ये n cos theta ऊपर जा रहा है और ये दो equations से करने से मेरा पहला equation n cos theta, okay, is equal to force of static friction plus mg plus mg. इसको इस तरफ ले लेता हूँ students. तो कहने से n cos theta minus force of static friction into sin theta is equal to mg. क्या ये clear हुआ students?
Force of static friction, can I put mu s into n? So n cos theta minus mu s into n sin theta, and that is equal to mg. Students, ये equation को मैं equation number 2 लेता हूँ मैं. Hope this part is clear to all of you all. I'm taking this as equation number 2. Friends, we are trying to derive the formula for maximum velocity of a car on a banked road considering friction. अभी हमारे formula में mu आएगा, which I'm trying to derive it. Now, students, which are the forces required for the body to perform circular motion? Then you need real forces, students. What are the real forces? Students, what are real forces? So real forces are classified into contact and non-contact, conservative and non-conservative, students. तो यहाँ पे कौन से फोर्सेस है सर? कॉन्टैक्ट फोर्स, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. यानी ये दोनों फोर्स मिला के कौन सा फोर्स बनता है स्टूडेंट्स? ये दोनों फोर्स मिला के तुम्हारे बनते हैं, दोनों को ऐड करोगे स्टूडेंट्स वो बन जाएगा तुम्हारा फोर्स सेंट्रीपिटल डायरेक्टेड फ्रॉम द कार. स्टूडेंट्स, डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार टुवर्ड्स द ज्योमेट्रिकल सेंटर. अगर तुमने वीडियो देखा होगा, एक लाइन जा रही थी फ्रॉम द कार टू द सेंटर, तो वो वाला जो है वहां पे फोर्स एक्ट होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कौन सा फोर्स है? सो दैट मींस n sin थीटा प्लस force of static friction into cos theta is equal to your net forces force centripetal. What is force centripetal? mv square. mv square by. Can I put force of static friction as mu s into n? Why not? So n sin theta plus mu s into n cos theta is equal to mv square by r. Students, let us take this as your equation number 1. ये तुम्हारा equation number 1 हो गया. This is equation number 2. I want to get the formula for V. Now, how do you go about with this, students? अभी कैसे करोगे? Friends, now how you're going to go about? Sir, putting the value of equation 1 and 2. See, I want V now. तो पहले केस में when there was no friction. Students, जब भी friction नहीं था, actually जब भी friction नहीं था, तो हम लोग ने पहला जो इसके लिए क्या derivation किया था? हमने n sin थीटा को ऊपर लिया था, n cos थीटा को नीचे लिया था, mv square by r upon mg, m got cancel, v got v, यानी हमने रेशियो लिया था. सेम थिंग यहाँ पे भी रेशियो लो ना. ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, डिवाइड करो, है ना? Yes, sir. At the same time, students, डिवाइड करने के बाद में प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स, divide the numerator. Students, divide the numerator and the denominator of the two equations. Students, divide the numerator and the denominator of the left hand side of the two equations by n cos theta. By what? n cos n theta. cos theta. यानी इसको पूरा n cos theta से डिवाइड करो, ये पार्ट को n cos theta से डिवाइड करो. I getting it the ratio. Now suppose अगर मैंने इसको n cos theta से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, तो कैसे? अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. n gets cancelled. What is sin theta upon cos? Tan theta. mu s n cos theta upon n cos theta कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ mu s बचेगा. Mus. डिवाइडेड बाय, हमने बोला था डिवाइड 1/2. यहाँ पे n cos theta कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? One. माइनस n cos theta नीचे होगा तो mu s Tan theta. that is equal to e square by rg. Mass will get cancelled. Did you get the formula now, V? Yes. So what's the formula for V max? Choose the maximum velocity of a car to move on a circular banked road is within root sign rg into bracket tan theta plus mu s, the whole upon 1 minus mu s tan theta. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स?
Vmax is equal to Rg into bracket tan theta plus Vs upon 1 minus Vs tan theta. क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. So students, whenever they ask you, now students always remember this as a formula. Now don't keep this in mind. क्यों? Suppose अगर मैंने यही प्रॉब्लम के अंदर बोल दिया neglect friction, तो तुम ये फॉर्मूला याद रखो ना. Neglect friction का मतलब म्यू जीरो हो गया. Yes, sir. हम कंसीडरिंग फ्रिक्शन है, डाल दो जीरो. यहाँ पे Same डाल form. दो जीरो, यहाँ पे डाल दो जीरो, तो बच्चा क्या आंसर है ना? Yes, sir. Rg tan theta. Are you getting, students? So now you have to keep this in mind as a formula. This was a formula not considering friction, and this was considering the friction part of it. Now, when you look into the formula, so students, Vmax आ रहा है ना, मुझे maximum velocity है. देखो numerator में मुझे कौन सा sign मिल रहा है? It is tan theta plus mu s. This is 1 minus mu s tan theta. Students, how is velocity inversely proportional to the denominator? ना? Students, देखो ये subtraction sign. Students, subtraction sign ये दिखाता है कि अगर ये value कम होगी तो ये बढ़ेगी. दूसरी बात, ये पॉजिटिव साइन दिखेगा अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो दिस आल्सो विल इंक्रीज. यानी जितना जितना अच्छा रोड, जितने अच्छे टायर्स, आई गेटिंग इट, इन दैट केस उतना ये न्यूमरेटर बढ़ेगा, उतना तुम्हारा ये डिफरेंस कम हो जाएगा इन दैट केस. तो जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी, एंड वी आर गोइंग टू गो फॉर Vmax. अगर मैं फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करता हूँ, डाल दो म्यू जीरो, Rg tan थीटा आएगा. So now students, whenever you try to learn about a car to move on a circular banked road, students always try to keep in mind the formula for velocity of a car on a circular banked road considering friction. At the same time, this formula holds true for Vmax only. Because when the car is going on a circular track, students, ये तुम्हारा circular track और car circular track में होगा, जब भी वो speed gain करना चाहेगा तो बाहर की तरफ जाते हुए speed करेगा. अगर उसका स्पीड कम होगा तो वो अंदर की तरफ आके आएगा. स्टूडेंट्स, getting an inner lane has slope. स्टूडेंट्स, दिया है स्लोप, बैंकिंग दिया है, पूरे पूरे पाथ में बैंकिंग दिया हुआ है स्टूडेंट्स. लेकिन जब वो गेन करेगा स्पीड तो बाहर की तरफ जाएगा, और उसका स्पीड जब भी कम होगा तो वो अंदर की तरफ आएगा. तो when it has maximum speed, students, the car is going to go on the outer side of the bank road. This is for Vmax. So that is why, students, my force of friction was along the plane downwards. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. Now students, अगर मैंने तुम्हें पूछा, can you tell me the formula for V minimum? Now I want my car to move on a circular bank road, but now I don't want to go with maximum speed, I want to go for minimum speed. So what is the direction of speed? Down the inclined plane, friction opposite. Opposite. Students, you must have learned in laws of motion. The direction of friction is always in the direction opposite to the motion of the body. So in the first case, अगर Vmax इस तरफ जा रहा तो friction नीचे की तरफ जा रहा था. अभी हम V minimum के बारे में बात करेंगे तो V minimum नीचे की तरफ आएगा तो friction ऊपर की तरफ जाएगा. Yes. Students, this is the only hint I'm giving it to you. But now I want you to derive the formula for V minimum by yourself. I'm not drawing the diagram for you all. You have to draw the free body diagram for by yourself. Draw all the forces acting, show all the vectors part of it. Show where exactly the force of centripetal and all is, force of friction for V minimum. Then the format of solving it is exactly same. Get me two formulas, two equations, students. जैसे यहाँ पे मैंने दो equations create किए थे, वहां पे भी तुम्हें दो equations मिलेंगे V minimum. समझ में आ रहा है? वो दोनों equations के left hand side के numerator को only left hand side, because when you go for the ratio, you divide the left hand sides on both the sides with n cos theta, तो वहां पे भी वही करो. डिविजन करने के बाद में तुम्हें यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल रिलेशन मिलेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में तुम्हें v square by rg ही मिलेगा. And we need to find out V minimum. Students, draw the diagram and try to get the answer by yourself. But before this,
If you want to write down this or whatever it is, I'll give you a time for this and then you can go for it, okay? Sir, I sent you in the chat box. But you have given the same formula. No, sir, I gave that before. Acha, acha, acha. Oh, correct. Absolutely correct. Yes, anybody else? No, I want to ask only for B minimum.
Okay, friends, can I erase this part? इसको मैं erase करूँ अभी? हाँ, students. Students, जब ये V minimum होगा तो होगा क्या मालूम है तुम्हें? क्या मिलेगा मालूम है students? चेंज क्या होगा? ये प्लस का सिर्फ माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, बस खत्म हो गई बात। स्टूडेंट्स, ये मिनिमम कभी होगा? ये वैल्यू मिनिमम कभी होगी? जब भी तुम्हारा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा प्लस साइन आएगा। And that is what Rakshit already told me. He gave the first formula also, second formula के लिए भी उसने स्टेटमेंट डाल दिया था कि सर सिर्फ चाहे साइंस को इंटरचेंज करना पड़ेगा, और ये जो प्लस क्या है वो माइनस कर दूंगा, तुम्हारा भी मिनिमम आएगा। और जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा भी वैसे स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? यानी जब भी v मिनिमम होगा ना स्टूडेंट्स, तो डू कीप इन माइंड इट्स tan थीटा minus mu s, this is 1 plus mu s tan theta. Yes, sir. Done. Students, अगर तुम्हें v minimum का डेरिवेशन के लिए जाना है, I'll just give you the equation students. If I go for v minimum, how to go about with this students? ये तुम्हारी कार है, agreed, यानी तुम्हारी वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, v मिनिमम के लिए वो इस तरफ आएगा स्टूडेंट, तो फ्रिक्शन इस तरफ जाएगा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ होगा, ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस होता है, m की नीचे की तरफ एक्ट होगा, ये 90 है स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे हम अगर मैं n को रिजॉल्व करूँ स्टूडेंट्स, तो एक इस तरफ जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये 90 है तो ये थीटा है, ये थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो n cos थीटा ऊपर जाएगा, एंड दिस इज n sin थीटा विल बी टुवर्ड्स द सेंटर. This is the center of the circular path. But now when you see force of friction students, what is the force of friction acting in this direction? ये तुम्हारा force of friction है, तो force of friction को तुम जब रिजॉल्व करोगे तो टू कंपोनेंट्स, तो कैसे करोगे? स्टूडेंट्स, इसका रेजोल्यूशन कैसे करोगे? जब इसको रिजॉल्व कर, Perpendicular. हाँ, तो परपेंडिकुलर यानी टू फोर्सेस परपेंडिकुलर, लेकिन एक फोर्स स्टूडेंट्स सेंट्रीपेटल के साथ में होना चाहिए ना, या तो उसके डायरेक्शन में लो या उसके डायरेक्शन ऑपोजिट में लो, कोई फर्क नहीं गिरता। ये देखो ना, ये जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट, ये थीटा है स्टूडेंट्स, ये थीटा है, तो ये पूरा 90 हो गया, 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 होगा, तो ये थीटा होगा स्टूडेंट्स तुम्हारा, तो ये क्या बन जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? एफ एस साइन थीटा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट्स कंपोनेंट साइन Yes, थीटा, sir. और ये होगा तुम्हारा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये होगा कॉस थीटा। अभी ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पे दो इक्वेशंस क्लियर हो जाएंगे, हो गया ना? यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या होगा सर? ये ऊपर वाला नीचे से बैलेंस कर रहा है, और साइडवेज में देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखना, कार परफॉर्म करिए सर्कुलर मोशन, स्टूडेंट्स कार परफॉर्म करिए सर्कुलर मोशन, यानी कार इज योर पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स रेडियली इनवर्ट जा रहा है ना, Yes. दूसरा फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन फिर भी कार सर्कुलर मोशन में जा रही है, यानी Yes. ये फोर्स इससे ग्रेटर होगा। Yes, Students, sir. the force of centripetal is actually what? The difference of the two forces accounts for the force required for the car to move circular path. Students, ये कौन सा concept है? ये कौन सा concept है? You must have learned in laws of motion. Student, lift ऊपर की तरफ जा रही है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो टेंशन ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, मोशन ऑफ द लिफ्ट ऊपर की तरफ है, तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा फोर्स हैज टू बी कंसिडर्ड टू बी मोर ग्रेटर एज कंपेयर टू द अदर वन? तो तुम्हारा कैसा T हैज टू बी ग्रेटर देन mg. तो टेंशन माइनस mg will cause a lift of mass m to move with an acceleration a. आया ना? हाँ स्टूडेंट्स, T minus mg will cause a lift of mass m to move with an acceleration a. Yes, sir. ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वैसे जब ये पाथ सर्कुलर है तो सर्कुलर के लिए में कौन सा फोर्स चाहिए? फोर्स सेंट्रीपिटल. तो बट ऑफ कोर्स ये इससे ग्रेटर होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बन जाता है द रियल फोर्स फॉर इट टू मूव. तो यहाँ पे तुम्हारा जो पहला इक्वेशन होगा वो इक्वेशन क्या होगा? सर पहला इक्वेशन होगा n sin थीटा माइनस force of static friction into cos theta is equal to mv square by r. फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या डालोगे? म्यू s into n डाल दोगे. दूसरा इक्वेशन क्या है? सर ये दो फोर्सेस ऊपर है वो इससे बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? n cos थीटा प्लस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन into sin थीटा दैट इज इक्वल टू mg. अभी देखा लो, आंसर निकालो स्टूडेंट्स. अभी तुम क्या करो, दोनों का रेशियो ले लो, लेकिन फिर न्यूमरेटर को डिवाइड करो बाय n cos थीटा, डिनोमिनेटर को डिवाइड करो बाय n cos थीटा. फ्रेंड्स यहाँ पे भी फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को म्यू s into n लेना, ये डिवाइड कर दिया, m कैंसिल हो गया, you'll get the value of v. So students, what's the formula for velocity? Under root rg tan theta plus or minus mu s upon 1 minus plus mu s tan theta. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? फ्रेंड्स क्या ये क्लियर हुआ? यानी अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव लेना है, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव लेना है, यही वेलोसिटी होगी. Friends, is it clear to all of you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can I erase this? Yes, sir. Okay, students. We got the formula for velocity of a car on a circular banked road, and we got the formula for velocity of a car on a circular banked road considering friction also. Okay, simply I give you velocity of a car on a circular unbanked road also, students. Okay, I gave you this, and I gave you the angular velocity of a rotating drum for a body or for a person inside a rotating drum. When the base goes away or the floor goes away, still the person performs circular motion, students. Okay, it doesn't lose contact. And now students, a few more relation. Okay, students, have you seen some kind of students bike races, students? Yes, sir. Students, Yes, sir. तो उसके अंदर अगर तुम देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा स्टूडेंट्स? बाइक रेसेस के अंदर जब भी वो सर्कुलर पाथ में जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हाउ एग्जैक्टली दे गो? कैसे दे गो? इंक्लाइन स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स ये हो गया. See they go inclined, students.
when they are going on a straight road में the students they'll be perpendicular. जैसे turning पे आते see how much they bend, है ना students? देखो जितना speed बढ़ाना होगा तो उतना वो bend करेंगे students. वापस सीधे रोड के ऊपर they'll become perpendicular. See how much they're bending. How much they're bending. The knee pads are actually see now they're perpendicular to the road. जैसे turning पे आते हैं they have to bend. See the knee pads. See the knee pads students are almost very close to the ground, a few centimeters away. Are you getting it? And so fast they move on a circular path. When they are going on a straight road, they are perpendicular. जैसे turning पे आएंगे, they'll bend and they'll tilt themselves with a vertical. And that's how they gain speed. Okay, students? We are trying to find out, students, the maximum speed of a car on a, maximum speed of a motorbike, students, on a circular road, students. Anybody who can derive the formula for it? I'll just draw a simple diagram for it, students. Think as if this is circular path, students. Okay, ये circular path है. Okay, think as if the tire is in this manner. ये तुम्हारा motorcyclist or a cycle we consider. Okay. So the path is circular. Okay. The path is entirely circular. Okay, you're going on a circular, but have you seen the cyclist or the motorbike students? The person who's moving, can I say he's tilting himself? अगर जब वो straight road पे जाता students, so he'll go perpendicular. Students, this is the ground. Okay, this is the ground. अगर वो perpendicular जाएगा तो ये होगा students. This is the perpendicular part of it. But now the person is not perpendicular. The person has inclined himself, students. The person has inclined himself with respect to the vertical. I want to find out, students, the maximum velocity of a motorbike on a circular road, students. I want a formula for Vmax. Hope you have got the diagram, students. Is the diagram clear, students? It's going in this direction, so it has to bend in that. अगर वो उस तरफ मैंने दिखा होता तो वो bend उस तरफ होता. Yes, anyone? Maximum speed of a car on a circular road. Sorry, of a bike.
Yes, anyone? सर एक मिनट Okay, fine. Yes, Zia, can you answer, Zia? Zia, are you there? Sir, I'm solving. Okay. Just Are a you second. understanding, Zia? Yes, sir. How was your paper, major test? अच्छा गया. Good. Your friend is doing very well. Smith is doing very well. What about Prisha? How's the paper? Home, how's the paper? Umer, how's the paper? Was it good? Sir, it was good. So mine also good. Minu, what about you, Minu? Minu, तुम्हारा पेपर कैसा था? वो टेक्स्ट करेगी. Minu, how was the paper? Very good. Okay, fine. So just now I showed you the video where the bike people who are bike racers, we consider जब भी वो सीधे रोड पे जाते होते the students when the road is straight they'll go perpendicular, when the road is curved they'll try to bend, जहाँ पे curve होगा they'll try to bend. And students वो bend इतना होता है from the vertical, उस टाइम पे उनकी speed बहुत ज़्यादा होती है students. But जब भी वो bend होते हैं जितना वो bend करेंगे उतना उनकी speed बढ़ती है students. That also you mark it very clearly. और जब भी वो bend होता है ना students, just try to check the knee pads. वो knees के ऊपर padding होता है students उनका. And if you see the knee pads will be hardly at a very few centimeters away from the surface. Road surface से hardly few centimeters away. And they gain speed. तो हमें चाहिए formula for maximum velocity of a biker on a circular road. Anyone? Come on, Rakshit, Mihir, Yes. answer. Glory. So should we consider friction over here? No, my dear, it's not considering friction. Okay, sir. क्योंकि banking है नहीं करके it's. And if you recollect, friction is independent of the surface area on contact. Students, ये पता है तुम्हें? Students, must have learned Yes. in force. Force of lateral friction is independent of the surface area in contact. Whether the surface area is larger or smaller, it's independent. Yes. It just depends on the number of cold wells which have been formed. तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे students, तो bike races में tires are of lesser area, students. Or since the tires are, we consider circular, of course, and the area in contact is less. So first of all, circular rotational के हिसाब से तुमने rolling motion ले लिया. The rolling friction is considered to be very small in comparison to the rest of it. And it's independent of your contact, surfaces in contact. Shall I do it for you all, students?
So सबसे पहले we'll try to find out the point where the forces are going to act. Students, so where exactly the point where the forces, so assume it to be the center of gravity of that particular body. या तुम पूरे बाइक को एक पॉइंट मास पकड़ लो स्टूडेंट्स, है ना? Yes. स्टूडेंट्स तो पूरा वेट अगर तुम देखोगे ना, फॉर एग्जांपल मोटर बाइक, तुम ये सोचो कि तुम मोटर बाइक में बैठे हो, तो स्टूडेंट्स तुम्हारा पूरा जो फोर्स है मोटर बाइक का तुम्हारा पूरा है, तो पूरे बाइक का जो सेंटर का जो इंजन है वहां पे तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाता है, यानी इंजन टायर्स के पीछे की तरफ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट को मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पकड़ लेता हूँ मैं। अगर कोई ये पॉइंट पकड़ रहा है तो कोई इसको भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले सकता है, अज्यूम इट, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वन एंड द सेम। ना सपोज अगर मैं बोलूं करके ये कौन सा फोर्स होगा, तो बोलेगा सर ये तो परपेंडिकुलर फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी द वेट ऑफ द mg. मोटरसाइकिलिस्ट, है ना? ये कौन सा फोर्स हो जाएगा सर, ये ग्राउंड है और ये इंक्लाइंड है, तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, नॉर्मल Normal. फोर्स। Since normal reaction force will be slightly inclined because the vehicle is inclined, है ना? Yes. ये तुम्हारा normal reaction force होगा। Is a cyclist bending with respect to vertical? Is a cyclist bending with respect to vertical? Yes. So how much is it? Theta is the angle of tilt of the cyclist with respect to vertical. हो गया ना तुम्हारा इक्वेशन? अरे सर ये तो इजी हो गया, यानी आप ये बोलना चाहते हैं को n को रिजॉल्व करो, यस, ये हो जाएगा तुम्हारा n cos थीटा, और यहाँ से जो सेंटर की तरफ जाता है वो हो जाएगा तुम्हारा n sin थीटा। n sin थीटा क्या बन जाएगा, 4 सेंट्रीपिटल। n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को। नाउ कैन यू गेट एन आंसर स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. व्हाट्स आंसर, यू गेट इट? व्हाट्स आंसर, यू बी गेटिंग इट? It's so simple, n sin theta. N sin theta is the force of centripetal, that is mv square by r. N cos theta balances mg. Take the ratio of the two. N gets cancelled. Sin theta upon cos theta is equal to tan theta. Mass will get cancelled. V square by rg. So what exactly V will be equal to? Under Under root root tan theta rg. rg tan theta. Friends, did we get the same formula for a car moving on a circular bank road? Yes. Lekin over there, what exactly theta was? In that formula, what exactly theta was? Theta was the angle of Angle of banking. the But it was the angle with the horizontal or with vertical? horizontal. And यहाँ पे theta is with what? Vertical. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, दोनों formulas exactly same है, and students you don't have to worry about the remembrance of the formula, but you can remember it easily. लेकिन थीटा को ध्यान में रखना, यानी जितना तुम टिल्ट करोगे, अभी देखो ये एक टिल्ट है, ये इतना सा टिल्ट है, अगर सपोज तुमने ये बाइकर ने और टिल्ट कर दिया स्टूडेंट्स, if the biker undergoes maximum tilt, are you getting it? His speed will still increase on a circular path. So as theta will increase from the vertical, what happens? The velocity will also go on increasing. And theta is with the vertical, students. And while solving questions, also do take care, students. At times they give you that a cyclist is bending. Students, they'll give you that the cyclist is bending on a circular path and it forms an angle. Students, they'll give you that it forms an angle of 30 degrees with the ground. Students, they give you 30 degrees with the ground. Agar 30 degrees with the ground diya hai, so what is theta? Is theta 60 degree. 30? No, theta is 60. Ye dhyan mein rakhna because theta is with the vertical. Are you getting it? And not with the horizontal. So please read your question very carefully, okay? Can I erase it, students? Yes.
Okay, students. So we learned about the formula for velocity of a motorbike on a circular track, students. Okay, v is greater than r, theta is to the vertical, students. Okay. Now we speak about for conical pendulum, students. As if you are aware about it. If I happen to go for a simple pendulum, students, do anybody knows the formula for time period of oscillation of a simple pendulum? Students, formula for time period of oscillation of a simple pendulum, students. And what is the time period of oscillation for a second pendulum? Students, most of you all have learned it, students. Many of you all, and almost all of you all have learned it in the lowest in the schools. Students, second pendulum, the time period for one complete oscillation is 2 seconds. And for simple pendulum, for one complete oscillation is 1 second. Students, one oscillation का मतलब क्या? It can be from mean to positive extreme, going back to negative extreme, coming back to mean. इसको हम बोलते हैं one oscillation. Are you getting it? तो it can be from दोनों केस में. ये पूरा एक oscillation के लिए 2 seconds लेता है second pendulum. ये एक oscillation के लिए 1 second लेगा simple pendulum. Students, one oscillation को हम ये भी बोल सकते हैं. अगर कोई एक्सट्रीम से शुरू करोगे, दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाओ, वापस यहाँ पे आ गए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, वापस तुम यहाँ पे, वो भी एक वन ऑसिलेशन है. एब्सोल्युटली करेक्ट अक्षत. अगर मैंने पूछा कैन गिव मी द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड, यस, टाइम पीरियड इज गिवन बाय फार्मूला 2 पाई अंडर रूट L by G, students. That's the formula. Akshat has given the answer. Students, ये जो L है वो क्या है? What does L stands for? Length of pendulum. Yes, it's the effective length of the pendulum. So effective length का मतलब length of the string होगा students plus radius of the bob. ये ध्यान में रखना students, center of gravity से जाता है force. शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा students, अगर length बढ़ेगा तो time period बढ़ेगा, length कम होगा तो time period कम होगा, because t is equal to 2 pi into L by G. अगर इसी का तुम डायग्राम यहाँ पे देखोगे तो students, ये एक simple pendulum का डायग्राम है, बता रहा हूँ. ये तुम्हारा point of suspension है students, this is what the thread is, और ये तुम्हारा bob है. Are you getting it? The bob is performing oscillating motion, students, about its mean position. तो एक ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ? x is equal to 0, ये मीन पोजीशन होगा. यहाँ पे आएगा तो x is equal to प्लस है, पॉजिटिव एक्सट्रीम हो जाएगा. यहाँ पे चला जाएगा तो x is equal to माइनस है. Is this theta very large or very small? Students, theta is very small. जब भी तुम देखो ना लीनियर ऑसिलेशन स्टूडेंट्स बॉब का, फिर बहुत ही ऐसा हल्के से होगा स्टूडेंट्स. The oscillation, look at my finger, students, the oscillation is very small in that case. Theta is very small. So for simple pendulum students, ये तुम्हारा deviation of the bob hai. This is how the bob deviates from its mean position to perform oscillatory motion. Look at the deviation. Is this angle very large or very small? Students, this is the angle with the vertical. Theta is very small, students. Simple pendulum mein the value of theta is less than 10 degrees. Students, have you measured 10 degrees in your protractor? Yes, sir. Less than 10 degrees. So is it very large or very small? Very small. Very small. Ideally it is 6 degrees. Students, ideally it's 6 degrees. Theta is very small. तभी जाके इसको हम बोलते हैं linear simple harmonic in nature, students. Simple harmonic, that means we can consider it's a sinusoidal wave. It's in form of a waveform. See one oscillation. So students, before going for conical pendulum, मुझे ये gesture देना था तुम्हें, और ये important है students. आगे जाके कोई भी तुम multiple choice question करो तो तुम्हें आएगा ये, यानी तुम्हें पता होना चाहिए what is time period of oscillation of a simple pendulum? 1 second. यानी एक oscillation के 1 second. सेकेंड पेंडुलम के लिए 2 सेकंड एक ऑसिलेशन के लिए. दोनों के फॉर्मूला सेम ही है, t is equal to pi root L by G. L का मतलब क्या है? इफेक्टिव लेंथ. वो क्या होता है सर? वो होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब. ये हुआ रेडियस ऑफ द बॉब. ये हुआ तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, where the entire weight is directed from that part towards the center of the earth. तो वो तुम्हारा ऑसिलेटिंग लेंथ हुआ. G is gravitational acceleration. Now students, tell me if G is gravitational acceleration, students, is G is considered to be more effective along a horizontal plane, or G is considered to be more effective when you go for vertical plane? Vertical. Vertical. Friends, अगर मैं simple question पूछूं,
Are you performing work against gravity when you're going horizontal? Or are you performing work against gravity when you climb upstairs? Climbing upstairs. Climbing upstairs. And when you're going horizontal, students, your work is not done with respect to force of gravity because gravitational acceleration is constant throughout the plane surface. जब तुम ऊपर की तरफ जाते हो तभी तुम्हारा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी प्ले अ रोल. हाँ, लेकिन दोनों केस में यू आर परफॉर्मिंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन आल्सो. अगर तुम हॉरिजॉन्टल जाते हो स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन. वर्टिकल जाते हो तो यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी एज वेल एज फ्रिक्शन, दोनों है. Are you getting it? ये ध्यान में रखना. Now our derivation or our concept is going for what kind of pendulum, students? Conical pendulum, students. We are going for conical pendulum, students. I want to find out time period of oscillation of a conical pendulum, students. And the formula for time period of oscillation of a conical pendulum, students, I'm giving it to you, is 2 pi under root L cos theta by G. ये तुम्हारा फॉर्म. Students, if I want to put about conical pendulum, how exactly, students? It's a kind of a simple pendulum only, students. ये टाइप का सिंपल पेंडुलम ही है, लेकिन देखो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है स्टूडेंट्स. ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. द बॉब इज ओवर हियर स्टूडेंट्स. मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, बॉब को मैंने डिस्प्लेस किया है. स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग टू डिस्प्लेस द बॉब from its equilibrium position, students, at an angle theta with a vertical. But now what I'm trying to do, I'm trying to displace at an angle theta and I'm trying to revolve it in a horizontal plane. समझ में आ रहा है? तभी जाके वो कोन शेप बनता है. इट्स नॉट परफॉर्मिंग लीनियर स्टूडेंट्स. यानी ये लीनियर नहीं है, यानी थीटा छोटा नहीं होगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे थीटा अगर तुम छोटा कर दोगे ना 6 डिग्रीज तो वो लीनियर जाएगा. लेकिन अगर सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट, तुम घर पे एक ट्राई करो. कोई एक ऑब्जेक्ट ले लो स्टूडेंट्स, तुम्हारा चार्जर ले लो ना. तो चार्जर का एक एंड हैवी होता है, दूसरे एंड से पकड़ो. अगर उसको अगर तुम छोटा एकदम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हो स्टूडेंट्स, छोटा सा एंगल डिस्प्ले तो वो लीनियर ऐसे होगा. लेकिन इसी को अगर तुमने अगर थोड़ा ज्यादा एंगल दे दिया तो वो सर्कल में मूव होगा. इट फॉर्म्स अ कोन शेप. So this is what is your conical pendulum. Now when you look over here, what exactly theta is? So theta is the angle with the vertical. Over here, theta is angle with the vertical, students. Yeah. So when you speak about for theta is the angle with the vertical, students, and its cone. When I say path is conical, is this clear, students? Is this clear? This is the conical path. Okay, so that is circular. Path is circular, students, but it's forming a cone shape. Theta is with the vertical. यहाँ समझ में आ रहा है students? So मैंने bob को displace किया from its mean position and then I'm revolving it in a horizontal plane. I get it? So ये जो तुम्हारा bob है ना students, it's going in a horizontal plane. So students, effect of gravity is constant. It's not moving in a vertical plane. ये मैंने top view दे दिया है. Now can you get an answer for the students? So what do we need to find? I told you to find out this formula. How do you get that?
Formula for time period of oscillation of a conical pendulum. So conical pendulum is a pendulum in which the bob is displaced at an angle theta with a vertical and the bob is set to move in a horizontal plane where r is the radius of the circular path, h is the perpendicular height of revolution, plane of revolution, students, and L is the slant height. L is the slant height, students. I can use theorem of Pythagoras over here. So I can simply take it as L square is equal to R square plus H square. L square is equal to R square plus H square. So what is L will be equal to under root R square plus H square. Friends, ये तुम्हारा slant height हो जाएगा. ये तुम्हारा perpendicular height हो जाएगा और ये radius of the circular path. The other things which you need to take care whenever you're solving multiple choice questions onto conical pendulum, students, because since it forms theta with the vertical, students, you can use a trigonometrical terms also. Students, what is sine theta? So sine theta will be equal to opposite upon hypotenuse, so it's r by L. Because what exactly is cos theta? Cos theta is adjacent upon hypotenuse, so that is equal to h by L. And you have formula में cos theta, students. Agreed. And what is tan theta? Tan theta will be equal to opposite upon adjacent, so it's r by h. अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे दो फॉर्मूलास चाहिए. चलो आई एम आस्किंग यू टू फॉर्मूलास. एक तो मुझे टाइम पीरियड चाहिए. दूसरा स्टूडेंट्स आई वांटेड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी. स्टूडेंट्स हाउ इज द बॉब मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. स्टूडेंट्स द बॉब इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. कोनिकल है ना. मुझे चाहिए स्टूडेंट्स आई वांटेड टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर linear or so called as tangential velocity for a bob moving in a horizontal plane. Students, I want to find out the formula for velocity. मुझे v का भी फॉर्मूला चाहिए. I wanted to find out the formula for V also. Hope the question is clear, students. Are you all understanding the question, students? The strength was 34. Now it has reached to 29. 5 students have gone. Still half an hour left. This is what the problem with students and studies. And the reason for them to go is network issue. Parents are least bothered over here. They don't question the kids at all. I don't know how many parents are sitting beside the kids in the study rooms. How many of them are looking at the kids? Are they writing anything in the books? Are they raising any questions? Are they saying it? Yes, I'm following it, not following it. None of the parents, very few parents must be observing it. And this is a problem in studies. Yes, Akrish, Carol, Rishi, Preet, Avnit, Ayan Khan, Dia, Jyoti, TP Bhatia, Jyoti Singh, some Kaushik has come in. I don't know about it. Who's this? Krisha, Nitu, Prapti, Prisha stopped speaking. Richa, Sakshi, Shrina, Shreya, Sujit, Umer. Umer has also stopped speaking. Vadim. Zia is not speaking at all. When asked, then only she replies. Zia, are you there? See, I'm asking her. I hope she replies. Zia, are you there? Yes, sir. She never replied by herself. She's been forced to reply. No. यार दिन तो आंसर तो करो ना. कभी तो आंसर करो. कभी आंसर नहीं करते हैं. सर हमेशा आंसर करते. थोड़े दिन नहीं किया मैंने. Very good. हमेशा. Prisha, only one answer you gave today, my dear. एक ही तो आंसर दिया है तुमने. Okay. Students, give me time period and velocity fast.
Okay, students, to get the formula for time period, students, chalo, get the formula for velocity. Students, ध्यान से सुनना, तुम velocity का formula निकालो, and since the bob is performing circular motion, मैं तुम्हें hint दे रहा हूँ, students. Since the bob is performing circular motion, the students, v को can you write on r omega? हाँ, students, circular motion का formula है क्या नहीं? The tangential velocity of a body performing circular motion is the position vector into the angular velocity, है ना? और ये तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा. फिर तुम ओमेगा को क्या लिखो? सिंस द मोशन इज पीरियोडिक, यानी ये जो कोनिकल पेंडुलम है, इट परफॉर्म्स व्हाट काइंड ऑफ मोशन? यूसीएम, टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट. तभी जाके मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछा है. तो अगर मुझे टाइम पीरियड चाहिए तो ओमेगा को कैसे लिखोगे? 2π/t इज इक्वल टू समथिंग. मुझे क्या चाहिए? टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहिए ना. तो टी को सब्जेक्ट बना दो, बाकी को यहाँ पे ले लो, हो गया तुम्हारा आंसर. ये देखो 2π आ रहा है. यानी अगर किसी भी हाल में तुमने v का फॉर्मूला निकाल दिया स्टूडेंट्स, तो t मिल जाएगा. हाँ या ना? यस, यू कैन गो डायरेक्टली ऑल्सो. तुम्हें डायरेक्टली आंसर मिल सकता है स्टूडेंट्स, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी फॉर्मूला चाहिए. चलो, तो अगर तुम ये निकालते हो तो यहाँ से तुम 20 किलो r ओमेगा ले लो, ओमेगा को 2π/t ले लो, और फिर t का आंसर निकाल दो. चलो, गेट द आंसर, लेट्स सी. स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन एमसीक्यूज. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टाइम पे यू नीड टू, बिकॉज़ द थॉट प्रोसेस शुड गो इन दैट वे. Sir, is the answer 2 pi under root L cos theta upon G? Yeah, that's the answer I've iterated over here, my dear. Sir, Give me I the answer for V. Give me the answer for V. Okay, can you tell me what did you do? Sir, I started with f cos theta is equals to mg, f sin theta is equals to mv square by r, and then divided it, and then I got tan theta is equals to v square by rg, and then you sir, then you sir, got you it B is got equal to the under exact root one. tan theta. Yes, sir. Okay, absolutely correct. And V is equal to r omega. आ गया तुम्हारा आंसर. This one so fast ही है. लेकिन मुझे बताओ रक्षित, when you did it, you took normal reaction force. हाँ रक्षित? Is the bob in contact with the surface, or the bob is in contact with a thread? Thread, sir. So will you go for normal reaction force or will you go for tension? Tension. हाँ, तो तुमने n लिखा था ना? नहीं सर, मैंने f लिखा था. अच्छा, फाइन फाइन. तो वो टेंशन होगा, जो f है तुम्हारा वो टेंशन. हाँ सर. Shouldn't see he has got the answer. There's one person who has got the answer. Gauri, what you are doing? Mihir, Gauri, are you there, Gauri? Yes, sir. क्या कर रहे हो तुम? Did you get it? What exactly he said it? Gauri. Yes, sir, kind of. I'll just do it once again. F cos theta वाला. नहीं, तुम ये डायग्राम को देखो ना आइडिया. क्यों इतना टेंशन ले रहे हो यार? तुम्हारा डायग्राम के अंदर क्लियरली है कि बॉब एट एनी इंस्टेंटेनियस पोजीशन यहाँ पे है. पाथ तुम्हारा सर्कुलर है ना? ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, ये थीटा है. कौन सा फोर्स फ्रॉम द बॉब टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है? तो ये टेंशन को मैं टी डैश लूंगा. नाउ सी, इज अ पाथ सर्कुलर? यस. कांट यू रिजॉल्व फोर्सेस? वेट किस तरफ जाएगा सर? नीचे की तरफ जाएगा. अभी मैं किसको रिजॉल्व करूं? हाँ गौरी, Tension. should I resolve tension or should I resolve mg? Tension. टेंशन को रिजॉल्व करूंगा क्योंकि पाथ सर्कुलर पाथ है ना. स्टूडेंट्स, वर्टिकल प्लेन में होगा तो mg होगा. सर्कुलर पाथ में क्या करोगे? टेंशन को रिजॉल्व करो. तो टू वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये देखो, ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है. ये थीटा, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो गया. Yes, sir. T cos theta. टेंशन को मैं टी डैश ले रहा हूँ स्टूडेंट्स. टेंशन को मैं क्या ले रहा हूँ? टी डैश. क्यों टी डैश ले रहा हूँ? क्योंकि टाइम इज ऑल्सो टी. स्टूडेंट्स, आई कांट पुट टू टीज ओवर हियर इन माय एक्सप्रेशन, तो मैंने टी कॉम्प्लीमेंट ले लिया. इसको मैं बोलता हूँ टेंशन. ये थीटा हुआ तो कहने से दिस इज टी डैश cos थीटा, दैट बैलेंसेस mg. ये कौन सा फोर्स होगा? फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स सेंट्रिपिटल. सो फोर्स सेंट्रिपिटल इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट? टी डैश sin थीटा. हाँ या ना? Yes, sir.
नाउ कैन गेट एन आंसर? हो गया तुम्हारा। अभी देखो टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, टी डैश कॉस थीटा एम जी, एग्जैक्टली दोनों का रेशियो ले लो, टी डैश कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर अपन एम जी, एम गेट्स कैंसिल, v is equal to अंडर रूट आर जी tan थीटा। अरे सर ये क्या कर रहे हो आप, एक ही फॉर्मूला कितनी दफे आ गया है? सर वापस एक दफे v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा हमें पहला मिला था बैंकिंग ऑफ रोड्स के हिसाब से, जब फ्रिक्शन आपने नहीं कंसिडर किया था। अगर आप फ्रिक्शन कंसिडर करते हो तो v max होगा, तो ऊपर पॉजिटिव साइन नीचे नेगेटिव साइन। फिर यही फॉर्मूला आपने साइक्लिस्ट के हिसाब से भी किया था, तो वहां पे भी फॉर्मूला आया v इज इक्वल टू आर जी tan थीटा। लेकिन जब भी हमने कार के ऊपर गए थे तो थीटा वाज विद द हॉरिजॉन्टल, साइक्लिस्ट के लिए ये तो थीटा वाज विद द वर्टिकल। अभी आप कोनिकल पेंडुलम में आए हैं, ना ही सिंपल पेंडुलम ना ही सेकंड पेंडुलम, यू आर गोइंग फॉर कोनिकल पेंडुलम, दैट मींस द पाथ इज सर्कुलर। तो सर्कुलर पाथ के लिए आप टेंशन को रिजॉल्व करोगे, एमजी को रिजॉल्व नहीं करते हो। तो यहाँ पे भी आपका जो टैंजेंशियल वेलोसिटी होगा, टैंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। नो अक्षर, इट वाज सिंपली आर जी tan थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज विद द वर्टिकल। जिसको स्टूडेंट्स एट टाइम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे ना, तो इसको हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। स्टूडेंट्स अभी जान सकते हो ना, जब भी तुम कोनिकल पेंडुलम के क्वेश्चन करोगे ना, तो दे माइट गिव यू दैट अ बॉब, ध्यान से सुना, अ बॉब ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम परफॉर्म सर्कुलर मोशन having a cone angle of 60 degrees. That means students the total angle is 60 degrees, 2 theta is 60 degrees, so theta क्या बन जाएगा 30 degrees. That is semi vertical angle students. तो ये जो थीटा हमें मिल रहा है ना स्टूडेंट्स, तो ऑलवेज कीप इन माइंड थीटा इज द टिल्ट ऑफ द बॉब ऑलवेज विद द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल। h is the height of plane of revolution, r is a radius of revolution, and l is a slant height. The relation between l sin theta cos theta tan theta. Now when I speak about, see the free body diagram, the bob is over here, tension t dash है, थीटा और थीटा alternate angles हो गए, इसको मैंने रिजॉल्व किया into two components, तो एक हो गया t cos theta, एक होगा t sin theta। t sin theta is a force centripetal, are you getting it? और ये क्या होगा, mv square by r is equal to t dash sin theta, और t dash cos theta क्या हो जाएगा, mg, m को कैंसिल कर दो, ये आ गया। फिर मैंने क्या बोला, मुझे टाइम पीरियड चाहिए, तो v is equal to r ओमेगा डाल दो, r into 2 pi by t डाल दो, सब्स्टिट्यूट करो, ट्राई टू रीअरेंज एंड गेट विद दिस आंसर। देखो तुम्हें मिलेगा ये सारे मैंने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं यहाँ पे। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Students, time period of a conical pendulum is 2 pi under root L cos theta by g. Now students, now which one you will remember? Will you remember the formula for simple pendulum or will you remember the formula for conical pendulum? Students, remember the formula for conical pendulum, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। Students, what is the difference between conical pendulum and simple pendulum? Conical pendulum के लिए you have a well-defined theta. Students, you have a well-defined theta. Theta is really a good angle over here, not very small angle. लेकिन स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम के लिए मोशन इज लीनियर। स्टूडेंट्स ये बॉब देखो, लुक एट माय फिंगर, द बॉब विल मूव ओनली अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। स्टूडेंट्स सो स्मॉल मूवमेंट। स्टूडेंट्स ये लीनियर मोशन के अंदर बस इतना ही होगा, ऐसा नहीं कि इट्स गोइंग टू गो इन दिस मैनर लीनियर एज एचएम, नो, इट मूव्स वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। स्टूडेंट्स अगर मैंने थीटा को स्मॉल ले लिया तो लेट अस टेक इट एज 0। व्हाट इज cos of 0? What is cos of 0? Theta is very small. Take theta as 0. What is cos of 0? 1. Students, by trigonometry, what is the value of cos of 0? 1. अगर 1 ले लिया, am I getting my answer for simple pendulum? तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसलिए बोलता हूँ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, तो ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यानी कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है, t is equal to 2 pi under root L cos theta by g। लेकिन अगर तुम्हें सिंपल पेंडुलम में जाना है तो थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, तो मेक थीटा टेंडिंग टू 0। एग्रीड? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir.
Students, I'm not teaching only Gauri or Mihir or Akshay. Please, I'm not teaching these three. What about the rest of the students? There are other students inside this class? Yes, Yes, sir. sir. So please do reply. Minu, कभी कभार तो unmute करके बोलो हाँ. Prisha is also typing it. I don't know about the rest of the students. Please don't make chapter stuff by yourself, students. Okay, and don't blame online. Students, online, according to me, it's a best mode. Students, no disturbance, clarity in sound, clarity in pictorial way of representation. You can have a revision of that by going to the recorded sessions again. Offline होता है तो एक दफे कर दिया और मिटा दिया, मिट गया. वो तुम लिखते हो बुक के अंदर, वो तुम्हारे ऊपर है, लिखते हो या नहीं लिखते हो. जितना लिखा उतना सही है, नहीं लिखा तो पूरी बुक खाली की खाली. There are lots of benefits of online. लेकिन that depends on to you. How do you make the online sessions to be beneficial? But very soon things are going to change. Offline होना शुरू हो जाएगा. Don't worry about that also. Students, चलो अभी मैंने बोला मुझे V का फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली ये फॉर्मूला चाहिए, मुझे V से नहीं चाहिए. तो what should I do? I don't want to find out V and then find out T. I want directly T. क्या करोगे? हाँ students? Come on, Rakshit, Mihir, Gauri. I'm teaching only 3 students, it seems. हाँ, मुझे V नहीं चाहिए, मुझे बिना V फाइंड आउट किए हुए मुझे T का फॉर्मूला चाहिए. ये मैंने क्यों दिया मालूम है स्टूडेंट्स, कि कभी कभार वो क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब इन ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम. तो ये फॉर्मूला, find out the time period of oscillation because a conical pendulum also performs UCM. That's why I put omega is 2 pi by t. अगर नॉन यूसीएम होता ना स्टूडेंट्स तो ओमेगा वाज d थीटा by dt. याद रखना स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज टाइम पीरियड रिमेनिंग कांस्टेंट. तो ओमेगा is 2 pi by t. Omega always time remains constant. Non uniform circular motion में omega will go on changing, so omega will not be 2 pi by t, it will be d theta by dt. Hope all these things you are remembering it because all these things are told to you earlier. That's why there are lots and lots of variables to be taken care of. Now I want the formula directly. Students, you all formula without going for this. क्या करोगे तुम? Students, what will do? Students, why are you thinking so much? मैं रक्षित इतना क्यों सोच रहे हो? सर आपने जब ये V पूछा तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को mv स्क्वायर बाय r लिखा, इसलिए हमने V फाइंड आउट किया है ना. लेकिन सर सेंट्रीपिटल फोर्स तो 3 फॉर्मूलाज है ना. Students, what are the 3 formulas of force centripetal? mv square by r mr omega square m into v into omega. स्टूडेंट्स, मैंने जब ये सिखाने के टाइम पे ये क्लियरली बोला था तुम लोगों को कि सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी तुम करोगे ना तो जितने होंगे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जब भी तुम सॉल्व करोगे ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स mv स्क्वायर बाय r यूज होता है. तो क्या होता है ना स्टूडेंट्स, क्या होता है मालूम है स्टूडेंट्स, ये 2 फॉर्मूलाज भूल ही जाते हैं कि ऐसे फॉर्मूलाज हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस में नहीं आते हैं. लेकिन अगर मैंने बोला कि मुझे v नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली t चाहिए, तो भाई mv स्क्वायर बाय r की जगह पे students can I write on m r omega square and omega can be written as 2 pi by t. आ गया तुम्हारा वीडियो को, ये वाला सॉल्व करो.
m gets cancelled. सॉल्व करो इसको अभी, t dash will get cancelled. ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट g tan theta by r, g tan theta by r and tan theta is r by h. r कैंसिल हो जाएगा, h by g and h is equal to l cos theta. What is h? l cos theta. स्टूडेंट्स कुछ समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? What did I tell you? हाँ या ना? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। गौरी 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 वाला मेकिंग मी टू क्राई, गौरी आर मेकिंग मी क्राई, गौरी आर मेकिंग मी क्राई. When you all don't understand, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, हाँ, when you all don't understand, whom do you all complain? Whom do you all complain? Well, complain your parents now. Mom, I'm not able to follow this guy. Now, when you all are harassing me, whom should I complain? Shall I call my mom over here in front of you all? She's fat, huh, students? She's fat and she has big eyes. She'll come and scare you all. How dare you trouble my kid? Gauri, don't laugh. और मैंने क्या किया मालूम है? अभी देखो, मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ. ये तो स्टूडेंट्स मैंने तुम्हें वेलोसिटी पूछा ना, इसलिए तुम v के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने लगे. अगर सपोज मैं ये तुम्हें पूछता ही नहीं, चलो मैंने v पूछा ही नहीं और मैंने पूछा कि चलो आंसर निकालो, तो देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा. यहाँ पे देखो, ये कौन सा फोर्स है? फोर्स सेंट्रीपिटल. तो फोर्स सेंट्रीपिटल को मैं क्या लिखूंगा? सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑन mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू t डैश sin थीटा, है ना? एंड t डैश cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? सर mg को बैलेंस कर रहा है. mm will get cancelled, t dash also will get cancelled. So what exactly? Omega will be equal to under root g tan theta by small r. So omega will be equal to under root g. What is tan theta? The tan theta will be r by h. So it's r by h. R will get cancelled. What is omega? So omega is 2 pi by t, which is equal to under root g by h. मुझे t चाहिए था, so t is equal to 2 pi under root h by g. And what is h? L cos theta. So t is equal to 2 pi under root L cos theta by g. गौरी क्लियर हुआ? यस सर. नाउ गौरी, तुम ये भी सोचो कि सर आप अपने आप को हमारे पे थोपते क्यों हो? आप जबरदस्ती आप जबरदस्ती हमारे ऊपर क्यों आ रहे हो कि हमें यही फॉर्मूला याद रखना है? डेरिवेशन के टाइम पे ध्यान से देखो ना स्टूडेंट्स, डेरिवेशन के टाइम पे तो मैं ये भी लर्न कर सकता हूँ, t is equal to 2 pi under root, ये फॉर्मूला मुझे ये cos थीटा में क्यों आप जबरदस्ती हमें थोप रहे हो? फॉर्मूला cos थीटा में क्यों लेके आ रहे हो? जब भी हमें मिल ही जा रहा है h by g, तो इसको मैं क्यों याद रखूं? स्टूडेंट्स, अभी एक सिंपल लॉजिक, स्टूडेंट्स फिजिक्स के प्रॉब्लम्स के अंदर ध्यान से सुना, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोनिकल पेंडुलम. तो स्टूडेंट मुझे ये बताओ, कोनिकल पेंडुलम का जब भी क्वेश्चन होगा तो व्हाट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन द प्रॉब्लम विल प्रोवाइड टू यू? लिसन केयरफुली, बेसिक इंफॉर्मेशन. तो तुम्हें बेसिक इंफॉर्मेशन द प्रॉब्लम विल बी प्रोवाइडिंग टू यू इज व्हाट? लेंथ ऑफ द कोनिकल पेंडुलम. एग्रीड? सिंस इट्स अ कोन, थीटा, बस इट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर. इसके बियॉन्ड क्या दे सकता है? h नहीं देंगे वो. Hello, they will not give you the height of the plane of revolution is so and so, the radius of the orbital path is so and so. नहीं स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में एक स्ट्रिंग है, नीचे बॉब है और मैं उसको कोनिकल पेंडुलम में मूव कर रहा हूँ, तो मुझे व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन? व्हेन आई विजुअलाइज इट, कैन आई मेजर द लेंथ? यस. अगर मैंने टिल्ट कर दिया तो कैन आई एस्टिमेट द एंगल बिटवीन द टू? यस. मुझे मेरे हाथ में थीटा और यू ही दिया है बस. दैट इज व्हाई आई हैव कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ L cos theta by g. Because this is a basic information will be provided to you. They will not provide h and g. They will not provide h. They will not provide r. They will not provide omega. Are you getting it? That is why students you have to remember the. अभी देखो हमने जो velocity का भी formula लिया था कार का friction के हिसाब से, तो देखो कौन से terms थे? सर कार सर्कुलर मोशन में थी, रेडियस आना जरूरी था क्योंकि रेडियस तुम्हें दे सकते हो. फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड वो, हाँ सर वो भी एक कंसेप्ट है, वो भी आना चाहिए, वो देते हैं. एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, तीन ही से पूरे फॉर्मूला में, पूरा जो बड़ा सा फॉर्मूला था आर जी इंटू ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू एस,
अपॉन 1 माइनस पूरे में क्या था, म्यू थीटा आर, बस वही था। एट टाइम्स वो आर भी नहीं देते स्टूडेंट्स, वो रेडियस भी नहीं देते, वो क्या बोलते मालूम है, द सर्कुलर पाथ इज ऑफ लेंथ 900 मीटर्स, यानी 2 पाई आर, सर्कमफरेंस इज 900 मीटर्स। उससे तुम्हें आर ढूंढना है और फिर फॉर्मूला में डालना है। यानी स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे ये ध्यान में रखो कि तुम्हें बेसिक इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड होती है। जो प्रॉब्लम के अंदर तुम्हें दिया हुआ था, लिखा हुआ था, उसी से तुम्हें सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है, तो तुम्हारा फॉर्मूला उस हिसाब से क्रिएट होता है। फिर तुम उसके अंदर यू ट्राई टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज इनटू इट टू गेट एन इंटरचेंज इन द फॉर्मूला. So now over here, if I want to go for force centripetal, of course there were three relations of force centripetal. I can go for mv square by r, mr omega square, m into v into omega. Now to my comfort, I can take any one. I can't go for v into omega. Hello, क्योंकि यहाँ पे t भी आ रहा है, v भी आ रहा है. मुझे t भी नहीं देंगे, v भी नहीं देंगे स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं है कि conical pendulum has a time period so and so, velocity is so and so. No, never they'll give you that. They might give you at times r, they might give you at times h. अगर तुम्हें L दे दिया और थीटा दे दिया स्टूडेंट्स, L दे दिया थीटा दे दिया, कांट यू फाइंड आउट H एंड R? हाँ, अगर मैंने L और थीटा दिया तो साइन थीटा, ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस R आ गया, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस से H आ गया, या cos थीटा एडजस्ट अपन हाइपोटेनस, ऑल थिंग्स यू गेटिंग इट. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो प्लीज फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को इजी बनाने के लिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स के अंदर ही तुम्हारा सोल्यूशन होता है. हमेशा कभी भी प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स को बहुत ध्यान से रीड करो. हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स व्हाइल सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. हाईलाइट का मतलब पूरे प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करना है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है और तुम्हारे ऑप्शंस के ऊपर ध्यान देना है. ऑप्शंस के यूनिट्स के ऊपर ध्यान दो, गिवन इंफॉर्मेशन के यूनिट्स के ऊपर ध्यान दो. वो दोनों यूनिट्स के साथ में खेलना शुरू करो, तुम्हें एक रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन मिल सकता है, and that you're going connecting to your correct approach. Okay, let's wind up the session, students. Okay, next lecture will be continued further. Okay, students. Okay, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. बहुत सारी